हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फन एंड लाइफस्टाइल। और आज का हमारा वीडियो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ के फिश स्वाद फेस्टिवल के बारे में। मैंने मुंबई में कई सारे सी फूड फेस्टिवल्स अटेंड किए हैं, लेकिन ये सी फूड फेस्टिवल एक अनोखा फेस्टिवल है क्योंकि इसमें आपको देश भर के सी फूड डेलिकेसीज टेस्ट करने मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस फेस्टिवल में हमें क्या देखने मिलता है। Hello guys, we are at National Central Institute of Fisheries Education, where they have organized an event where all the seafood, you can taste the seafood from all over India. So right now we are at stall number 1, Aroma of Northeast Fish Tastic Food. So it is from Northeast. So you know seven sisters. So we say 7 sisters and 1 brother. This is prawn chow mein, ma'am. This is shinju. This is from Manipur, specially made from Manipur, and we can make it veg or non-veg by adding fish to it. This is fish salad. This is fish momo. We have kimbap. We have fish pitika, which is mashed fish, and then we have prawn pickle. This is from Nagaland, and then we have paturi, fish paturi, and then horiomas, we call it. This is steamed fish with mustard seeds. Okay, steamed fish with Mustard seeds, yes, ma'am. And then we fresh water. yeah, ma'am, freshwater fish. Okay. And then this is black rice kheer. Okay. This is fish puchka. This is a special attraction of today. Fish puchka means pani puri, fish pani puri. Manu, you want to taste? Fish pani puri. So we are now taking a parcel of Nattu Karyang, which is dry fish pickle. I'm going to taste this. अर्पिता मैडम, हम जानना चाहते हैं कि ये जो आपने फेस्टिवल रखा है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें जानकारी दे सकते हैं? थैंक यू राखी जी। ये हमारा इंस्टीट्यूट है केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। हमारे डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर रविशंकर CN। उनके गाइडेंस पे ये पूरा फिश स्वाद फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सुपरविजन है हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर डॉक्टर NP साहू जी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर स्टेट का एक स्टॉल है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का आपके सामने है अरोमा ऑफ नॉर्थ ईस्ट फिश टेस्टिक फूड। फैंटास्टिक की जगह इन्होंने लिखा है फिश टेस्टिक फूड। उसके बाद है तेलुगु रुचुलू, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। उसके बाद आप देख सकते हैं कर्नाटक का है, बिहार और झारखंड का है, कश्मीर का है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है और केरला का है और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का है। आप जितने स्टेट्स हैं उनकी सब की पहचान आपको यहाँ पर मिलेगी और सब ने बहुत मेहनत की है। हमारे स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया है कि आप मतलब लाजवाब है और आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Right now we are at stall number 4, Kerala Kattukada. Hi, so can you just help us? Ma'am, this is Your Kerala. name, please? I'm Teresa, and this is Kerala parota. This is payasam. It's almost over. This is tapioca. We call it kappa. This is seerfish moli. That's also almost over. And this is Which fish? Seerfish, ma'am. Surmai. Surmai. And that the final one is veg stew, ma'am. We have putta, 2 varieties, rice putta and ragi putta. This is ragi putta. And the other one is rice putta. We had appam, that's over, ma'am. Yeah. So it was a good response. Yes, ma'am. Right now we are at stall number 3, Bongo Kalinga Boj from West Bengal and Orissa. So can you just help us with your dishes? Come again? Chili fish. Chili fish. Which Yeah. fish? This is catfish only. Oh, shingala. So this is prawn biryani, which comes with an egg and potato. This is Kolkata style biryani. Okay. And this is fish frankie, which is in Kolkata we used to call it fish roll. Okay. And this is rasgulla, Kolkata famous rasgulla. And this is a traditional Odia dessert, which made of millet and milk. Okay, types of kheer. How much is this for? 50 and 50 for rasgulla also.
right now we are at stall number 2, Telugu Ruchilu, and these are from. We are from Andhra Pradesh and Telangana. They are from Andhra Pradesh and Telangana. Can you just help us understand your dishes? This is mango rice, and we will make it with mango plus lemon, both mango and lemon rice. And This is raw mango. raw mango. We made it with raw mango. Kairi rice. Kairi rice. And this is double ka meetha sweet. We made it with bread, milk, and sugar. Okay. And it is also famous in Hyderabad. And this is Hyderabad shrimp biryani. Okay. Shrimp biryani, like prawn, you will know that biryani. And this is millet one, ragi, ragi, we will make ragi mal, ragi java. It is so nutritious to us, so ragi. And this we will eat combinedly with this fish gravy. And fish we used is rohu fish. Rohu. Fish gravy, like fish curry. And this is the thali. This is all thali. Combinedly all dishes in the thali. So can you express again over here all the dishes? This is lemon plus mango rice. This is shrimp biryani. This is ragi and prawn fry, fish fry. And this is fish pulsu, like fish curry. And this double ka meetha sweet. So this pulsu you said Fish curry. which fish? Rohu fish, rohu. Fresh one. Freshwater, inland fish. Right now we are at stall number 6, Tamil Virindu. We have crab fry, surmai fry, then iral tokku, that is shrimp tokku, shrimp gravy, then panagam. In case of drinks, we have panagam, then crab rasam, then we have spirulina juice, seaweed pudding, shrimp fry, then fish curry, idli, dosa, rice. That's all. And this is made of millet laddu. So millet is very famous in South. I think millet laddu. It's very healthy. So guys, this is crabs. We Koli people also eat these crabs, and right now let's ask them what masala they use in this crabs. Chettinad masala. Chettinad masala, okay. And so you eat this crab with dosa. Dosa idli rice. Okay. And this is surmai fry, right? And this masala? Okay. Yeah. मुशीचा खिम्मा बोलतोय ते. मुशीचा खिम्मा. That's my favorite. And do you use coconut in any of your dishes? कोली मच्छीमार समाज. तर आपण त्यांना विचारूया त्यांनी आज काय काय स्पेशल बनवलेलं आहे. आपल्या या संस्थेतील महिलांनी बांगडे, सुरमई फ्राय, परत पापलेट फ्राय, कोलबी बिर्याणी आणि एक भाजीचा पण आयटम ठेवलेला आहे. आपली भाकरी, पाणी असं जवळा अशी थोडी सर्वसाधारण मच्छी ठेवलेली आहे. जास्ती व्हरायटीज ठेवलेल्या नाही आहेत. तरी आपण बघू शकता इथे सुरमई फ्राय आहे, बांगडा फ्राय आहे, जवळा, त्याच्यात वांगं टाकलेलं आहे हे आणि पापलेट ठेवलेलं आहे, बांगडा इथे आहे आणि कोळंबी मसाला आहे, हे कोळंबी बिर्याणी ही आणि मटर पनीर स्पेशली व्हेज लोकांसाठी कारण आज सोमवार असल्यामुळे आणि त्याचबरोबर रोटी भाकरी जी बोलतोय आपण तांदळाची ती खरंच उत्कृष्ट आणि अप्रतिम, याची चव खरंच चांगली असते. तुम्ही खरंच एकदा कोळी लोकांची भाकरी खाऊन बघा, तुम्ही सगळ्या भाकऱ्या विसरणार. वी ॲट स्टॉल नंबर 9 करुणाळा सविरुची. सर, कॅन यू जस्ट हेल्प अस टेल अबाउट युअर डिशेस? Hello madam, we are from Karnataka. This is Karnataka Savirichi. Karnataka Savirichi means a good taste of Karnataka. This is the first item this is squid rings. It's made up of squid. We have cut into in the form of rings and put masalas and we have made them. And this is a crab cutlet which is made up of crab. And this is a crab sukka. This is a delicacy of Mangalore. It is made up of crab again. And this is a prawn ghee roast made up of prawn. There are 8 to 10 pieces in the one bowl. Prawn ghee roast. People say don't use ghee in fish. So No, it gives very good aroma and taste also. okay. And this is a mackerel fish curry. This is a normal what we do with mackerel coast. So we are doing that one. And this is a sweet one.
This is coconut. This one sweet. Holige, kai holige. 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 How much it is for? Peanut. This is peanut holige. This is a coconut holige. There is a difference. And this is the fish chakli. Which fish is used? This is a croaker we have used. Croaker. Croaker. Which fish? Doma, what do you say? Doma. Okay, that kind of fish. And this is a prawn biryani again. And this is a neer dosa. Neer dosa. It is a normal staple food in Mangalore. This is the ragi dosa. Okay, which is made. International Year of Millet. I know. Okay. I'm hearing this last so many This cocktails. is a chutney. This is a chutney powder from fish. Which fish? This is Bombay. not bombil. This is a prawn-like species. Okay. Small prawns. Okay. Dry prawn. Dry prawn. Yes. Yes. अब हम हैं स्टॉल नंबर 8 पे अपन बिहार झारखंड सो देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ बिहार एंड झारखंड फ्रेश वाटर फिश सो कैन यू गाइस हेल्प अस एक्सप्लेन सो हमारे पास 6 आइटम्स थे। एक बिहारी लिट्टी चोखा था, झारखंडी फिश फ्राई था हमारे पास। आप देख सकते हैं एक मल्टीग्रेन फिश पराठा हमने बनाया था। चूँकि हम जानते हैं इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हमने एक मल्टीग्रेन मिलेट्स के मिला के फिश पराठा बनाया था। फिर हमारे पास श्रिम्प टेम्पोरा था, मलपुआ था और आम पन्ना था। तो ये सारे 6 आइटम्स हमने इस बार तैयार किए थे। इसके साथ आपको जो बिहारी लिट्टी चोखा होता है, हम सब जानते हैं कि लिट्टी चोखा बिहार की कितनी फेमस डिश है, तो उसे हमने बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहा यहाँ पे CIP में, हमारे मिनी इंडिया में, कि बिहार में लिट्टी चोखा, और हम सब इंडिया को टेस्ट करना चाहते हैं लिट्टी चोखा कैसा होता है। अभी लिट्टी चोखा मैम हमारे पास आइटम बहुत हाई डिमांडेड थी इस बार, इसलिए वो भी चूँकि ख़त्म हो चुके हैं। उसी तरह हमारे ये मालपुआ और लिट्टी चोखा वो पहले आइटम्स जो सबसे पहले फिनिश हुए, जो ऑथेंटिक थे, टेस्ट होता था झारखंड और बिहार का। ओरिजिन की फिक्स थी वो सब जा चुकी है। अभी झारखंड हमने और जो बिहार के इनोवेटिव ओरिजिनल टेस्ट से डिशेस वो बनाई खत्म हो थी वही चुके हैं है। मैम। और जो हमारा इस बार नया आइटम्स था उनका भी बहुत अच्छा डिमांड हमें मिला है। फिश फ्राई मैम फ्रेश वाटर का आज भी हमें पता चलता है कि कितनी हाईली डिमांडेड है, वो भी रोहू फिश की मैम। तो वो हमने सबने हमें टेस्ट किया। और श्रिम्प टेम्पुरा का भी एक बहुत अच्छा हाई डिमांडिंग हमें लगा मैम। shrimp tempura Manoj, here they have written shrimp tempura and this is multigrain fish paratha. So which fish you have used in this paratha? रोहू So you have okay, so aloo paratha, rohu paratha like that. with multigrain atta. Aloo paratha के बदले रोहू paratha with multigrain atta. Hello everyone, we are right now at CIFE with the director Mr. Dr. Ravi Shankar. Sir, can you just tell us about this event? Okay. Yeah, good evening everyone. As you know, fish is very delicious, fish is very nutritious, and among all the food products, fish is the best. It will help you combating the nutritional deficiencies and all that, and it will ensure the nutritional security. So we want to promote fish as a health food. So for that, as you know, CIFE is having it's a premier institution, a fisheries university, where students are doing their masters and PhD program. What we do in addition to the courses what they are studying, we want to promote fish as a health food to everyone, because many people are undernourished, malnourished. So we want to promote fish as a health diet. So in that direction, we have organized this Fish Swad, our fish festival, wherein we have all the students from Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Northeast. So we have the students representing all the states of the country. So India is a wide, rich heritage. Each state has its own delicacies. So here what we have done, we are showcasing, our students are showcasing all the delicacies of the different states, and we expect everyone to come and enjoy the delicacies and encourage our students. In turn, we want to promote fish as a health food. Thank you so much. So we can say like this, as you are saying nutrition, so we can say मच्छी सेहत के लिए अच्छी. Yeah, मच्छी सेहत के लिए अच्छी.